So welcome everybody. Today we are going to start the new chapter proportion. It is just the next part of the chapter ratio. And when you will go to the senior classes, then you will get a combined chapter known as the ratio and proportion. As we are at the beginning stage, so ratio is given separately, proportion is given separately. But when you will go to the 7th, 8th and other classes, so you will get ratio and proportion at the same chapter. You know what is the ratio? Ratio means comparing the two like items and bringing them in the lowest form. जैसे 8 and 12. तो 8 and 12, 8 upon 12, 2 upon 3. तो ratio is 2:3. This is when we are talking about the two things only. But let us imagine in the same manner we want to talk about the others. इसे आप ऐसे समझिए कि in your class when you go to conduct the class, you know that most of our benches are of the 2 student. ओके तो मैंने फर्स्ट स्टूडेंट को बोला, मैंने कहा बेटा ऐसा है, आपका नंबर क्या है? उसने कहा 8. मैंने कहा आपका नंबर क्या है? उसने कहा आप कितना नंबर लेना चाहते हैं? लेट अस इमेजिन उसने कहा आई वांट टू टेक 10. तो मैंने कहा 8 10. इट मींस कटिंग किया 4 5. तो मैंने कहा बेटा ऐसा है, आप जितने भी स्टूडेंट हैं आप सारे अपनी सीट के ऊपर नंबर एज्यूम करेंगे इन दिस. ठीक है, आप सब भी नंबर एज्यूम कीजिए. फर्स्ट ने एज्यूम किया था 8 10 4. अगले बच्चे से मैंने पूछा, मैंने कहा हाँ बेटा आपका नंबर क्या है? उसने कहा सर 4 5. मैंने कहा 4:5. उसे नेक्स्ट मैंने पूछा, मैंने बोला व्हाट इज योर नंबर? उसने कहा सर 12 15. कटिंग किया अगेन 4:5. और जब मैंने देखा पूरी क्लास के अंदर तो मैंने क्या देखा कि ऑलमोस्ट सभी बच्चों के जो नंबर थे कटिंग करने पे क्या था 4:5. तो मैंने कहा नाउ यू ऑल आर इन द सेम प्रोपोर्शन. प्लीज ध्यान से सुन लीजिए. मैंने आपकी क्लास में दो बच्चे बैठे हुए थे इन द सेट ऑफ 2 जैसे नॉर्मली हम लोग अपनी क्लास में बैठते हैं. ओके तो मैंने आपको बोला, मैंने कहा बेटा आप ऐसा कीजिए, आप लोग अपनी अपनी आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से या मे बी इंडिपेंडेंटली आप एक एक नंबर एज्यूम कर लीजिए एंड आई विल कम टू योर सीट एंड आई विल आस्क टू यू. मैं पहले बच्चे के पास बोला, मैंने कहा बेटा आपका क्या नंबर है? उसने कहा सर 8. मैंने दूसरे पूछा उसके कंपेनियन को, मैंने कहा व्हाट इज योर नंबर? उसने कहा 10. तो मैंने कहा 8 10. कटिंग किया 4:5. नेक्स्ट बच्चे के पास में क्या, मैंने कहा बेटा आपका क्या नंबर है? लेट अस इमेजिन उसने कहा सर मेरा नंबर है 4, उसका है 5. तो मैंने कहा कटिंग इज नॉट पॉसिबल 4:5. थर्ड सीट पे गया, मैंने कहा बेटा आपने क्या सोचा है? उसने कहा सर 40 50. मैंने कहा कैंसल 4:5. ओके उसे नेक्स्ट सीट पे मैं गया, मैंने कहा बेटा आपने क्या सोचा है? उसने कहा 2 and 2.5. 2 and 2.5. मैंने कहा डेसिमल हटा दो 0. कटिंग कर दिया 4:5. तो इन दिस मैनर मैंने पूरी क्लास में जब मैं घूमा तो मैंने क्या देखा कि हर सीट के ऊपर जब मैं रेशो लेता हूं तो रेशो को कटिंग करने के बाद लोएस्ट फॉर्म के अंदर वैल्यू सेम आ रही है 4:5 4:5 4:5. तो मैंने ये कहा कि बेटा आप सभी के वैल्यूज क्योंकि सेम आ रही है तो इसका मतलब यू ऑल आर इन प्रोपोर्शन. समझ रहे आप? रेशो जो होता है 2 या 3 का होता है. अगर वैसे ही सेट सभी के सेम वैल्यू देंगे तो वी विल कॉल देम इन प्रोपोर्शन. एग्जांपल के लिए लीजिए, जैसे आपकी क्लास में कई बार 3 स्टूडेंट वाली बेंच भी होती है. ओके तो मैं 3 स्टूडेंट वाली बेंच में गया. एक बच्चे ने कहा कि सर मेरा नंबर है 10. दूसरे ने कहा 15. तीसरे ने कहा 20. मैं दूसरी बेंच पे गया, मैंने कहा बेटा आप अपना नंबर बोलो. उसने कहा कि सर 2 3 4. मैं थर्ड बेंच पे गया, मैंने कहा बेटा आप अपना नंबर बोलो. उसने कहा 20 30 40. ओके फिर मैं नेक्स्ट बेंच पे गया, मैंने कहा बेटा आप भी अपना नंबर बोलो. तो लेट अस इमेजिन उन्होंने कहा कि सर 80 120 160. तो लेट अस इमेजिन 4 बेंचेस थी एक के पीछे एक. और मैंने उन बच्चों से पूछा, मैंने कहा बेटे हाउ मच मार्क्स या हाउ मच money you are presently having? Let us imagine this is the money possessed by. तो मैंने इसका कटिंग किया तो कटिंग हो ही नहीं सकती थी तो 2:3. इसकी कटिंग किया 2:3:4.
इसकी कटिंग की 2:3:4. After its cutting 2:3:4. So what I find out that the ratio of each and every bench student of each and every bench is same. तो मैं उनको ये नहीं कहूंगा बेटा तुम सारे सेम रेशो वाले हो, मैं कहूंगा बेटा यू ऑल आर इन सेम प्रोपोर्शन. मैथमेटिकली एक कॉमन आदमी क्या कहेगा कि बेटा तुम सबका रेशो सेम है, यू आर ऑल हैविंग द सेम रेशो, ऑल बेंचेस आर हैविंग सेम रेशो. ठीक. और मैथमेटिशियन क्या कहेगा बेटा यू ऑल आर इन प्रोपोर्शन, यू ऑल आर इन प्रोपोर्शन. अंडरस्टैंड? ओके. तो व्हाट इज द relationship between the ratio and proportion? Ratio is only one type comparison of the set of item, maybe of 2, maybe of 3. और proportion क्या है? Comparison of one set with the so many other sets. And if on comparison all sets are same, then we call them they are in proportion. I hope you understand. Any student who know the previous chapter number 11 will automatically understand this chapter. Okay, so I am going to pause it and I am writing the first question so that writing time will not waste. Okay, so I am going to write the first question, then again I will make it live. You continue in the same video. Okay, thank you. Now beta, question number 1, first part, third part, fifth part is written, second, fourth and sixth part is your homework. Now beta listen, they are saying that these are the given and you have to tell कि what they are in the proportion or not. याद रखना रेशो हर किसी का होगा, हर पेयर हर सेट का रेशो होगा, लेकिन प्रोपोर्शन होगा या नहीं दैट इज नॉट श्योर, क्योंकि कंपेयर करेंगे रेशो सेम आ जाएगा तो प्रोपोर्शन है, अदरवाइज नो. फॉर एग्जांपल इट इज 8/16, 1/2, that is 1:2. Okay, now compare. 12/15, 3/4 ja, 3/5 ja, that is 4:5. हाँ जी, is the ratios are same? Ratios are not same. It is 1:2, that is 4:5. तो आप देखेंगे these are not in proportion. Okay, please सुन लीजिए. I convert it into the lowest form. And I find out that the on lowest form, when I write as the ratio, the values are not same, so they are not in proportion. Now here 12/3, 8/2, 4/1, 4/1, that is 4:1, that is also 4:1. So now ratio is same, so आप देखेंगे these are in proportion. Okay, now come to this 15/18, 10/12, 3/5 ja, 3/6 ja, 2/5 ja, 2/6 ja, 5:6, 5:6. As the ratios are same, so these are in proportion. And now understand, whatever the pair they will give, I will write in the lowest form, and after writing the lowest form I will see the ratio is same or not. If the ratio is same, so they are in proportion. If ratio is not same, they are not in proportion. Okay, now I am going to freeze the opening and writing the next, but you continue with the same video. Okay, now my dear student, question number 2, first, third and fifth part is on the blackboard, and you know that second, fourth and sixth part is your homework.
Now beta, please. This is in the equal to sign is given. It means they are saying themselves that these are in proportion. Yani ki when you solve these ratio, answer will be same. If answer will be same means is equal to will continue. So this x upon 4 can be written as x is to 4 can be written as like this. 6 is to 8 can be written like this. Okay. Now 3 ja 4. X upon 4, 3 upon 4 on cross multiply x is equal to cross multiply. Okay. Now firstly I write them as the fraction. After that, if cutting is possible, I reduce them, and after reduction I just cross multiply and then I get the value of x. Now there is the second part. Firstly write as a fraction. Now cutting is possible. 2 upon 3 x upon 18. Now cross multiply. It is 36. It is 3x. So further solving, x is equal to 12. Now one very important thing I want to bring in your notice. Whenever is equal to is at the between the portion, between left hand side and then between. So at the beginning we write this side. This implies is equal to in between. So this implies. याद रहेगा, whenever is equal to between the equation, then we start with the this implies. Now here 5 upon 15, 4 upon x, 1 upon 3, 4 upon x, x is equal to 12. Now again this implies sign. And it out. And it out. Sure. Okay. So in this manner, as these are in proportion, ratios will be equal. Ratios are equal. So can be cross multiplied and you will get the value of x. Okay. Now I am going to start the next question number 3. Please. Welcome back. Now, beta listen. This is the question number 3. Again, first, third, and fifth part. Second, fourth, and sixth part is your homework. They are saying that these are in proportion. If these are in proportion, it means the ratio of first and second is equal to third and fourth. Yaad rakhna. Whenever they are not giving, they are just saying proportion. Please listen. Firstly, we have to see how many terms are there. If they are even number of terms, the ratio will be like this. First is to second, third is to fourth, fifth is to sixth, 7 is to 8, like that. If number of terms are odd, like 3, 5, 7 and so on. So in that we go first is to second, second is to third, third is to fourth, fourth is to fifth. Yaad rakhna. When even numbers are there, then first is to second, third is to fourth, fifth is to sixth, like this. And when odd numbers are there, first is to second, second is to third, third is to fourth, fourth is to fifth, like this. और इसको हम लोग बोलते हैं continuous proportion. और में हम लोग क्या बोलते हैं? Continuous proportion. याद रहेगा? चलिए. Now there are only 4 terms, so this is the even proportion. So let me take it. Okay, this is as these are in proportion. X is to 6 is equal to 10 is to 50. उन्होंने क्वेश्चन दिया था, मैंने उसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिख दिया. तो इट इज x upon 6 is equal to 10 upon 50. Lowest form. X upon 6 is equal to 2 upon 3. On cross multiply, 3x is equal to 12, x is equal to 4, and this implies sign. Find it out? Sure? Check. As these
in proportion. 2 is to x, 10 is to 25. That is 2 upon x, 10 upon 25. Let us bring in the lower form. 2 upon x, 2 upon 5. Cross multiply, 10 is equal to 2x, so x is equal to 5. And as usual, this implies sign. Okay? And now, firstly I write them as a proportion, then I write them as a fraction, then after cross multiply and cutting, value of x is there. Now the last part, as these are in proportion. 9 is to 12, x is to 8. So 9 upon 12, x upon 8, cutting is possible, 3 upon 4, x upon 8, 24 is equal to 4x, x is equal to 6. Okay, so this is the fifth part of question number 3. So for today I am going to stop the work here. You are requested to go through the missing part, या करो homework part, and please practice these also. If you are having any type of doubt regarding any one, okay, or homework, please keep it in your mind. After this chapter is over, I will come to the live class on June, and then you can ask, sir, please explain this question or that question, this term or that term. We will try to solve that. Okay, please practice. याद रखिएगा, practice makes the students perfect. Thank you. Have a nice day.